Hello बच्चों, welcome to Vision NEET IIT Academy and today we are going to start a very important chapter and it's called vectors. ठीक है ना? तो वेक्टर को लेके अगर हम लोग डिस्कस करें प्योरली, ओके, देन इट कम्स अंडर बेसिकली मैथमेटिक्स, ओके. लेकिन हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स में तो ये चैप्टर आता ही है. So why in physics we are then including it? Because actually physics में इसका application है. Most of the applications of this chapter you will find in physics. So if your concept in vector is very good, okay, is very rigid, then you are going to get the advantage of it, okay. When we will study kinematics, when we will study Newton's laws of motion, when we will study rotational mechanics, when we will study even gravitation, है ना. और वेक्टर्स का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि बाद में भी हम लोग जब क्लास 12 पे आप लोग जाओगे एंड इन क्लास 12 syllabus, you know, there are chapters like electrostatics and things like that. वहां पर भी हम लोग वेक्टर को अप्लाई करेंगे. So vector is a very important chapter as far as physics is concerned. That is why I want all of your attention here. Okay, so this comes under physics class 11 and the name of the chapter is vector. ठीक है. So in this chapter, in our lecture, what we are basically going to study, okay, this we will see in a nutshell, right. Say for example, what are the topics that we will cover now? We will in today's lecture we will be covering the introduction portion. जैसे कि वेक्टर क्या है, हमको तो पता नहीं ना हम कि what is vector. So you have to understand what is vector and we will basically see that, okay. Followed by the geometrical property of vector. इसका मतलब क्या है कि how to represent the vector geometrically, ठीक है ना. और वेक्टर सर्टेन लॉस को फॉलो करते हैं. जैसे कि मैं अगर आपको बोला कि you please add 5 with 3, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, you will just simply add 5 plus 3 and you will say sir the answer is 8, है ना. But if I say that add east direction, you go 10 kilometers to the east and go again 10 kilometers to the north. Okay, now find out what is your displacement from the starting point and in which direction it is. Will you add? Simply addition यहाँ पे नहीं होता है. We will see how direction, when direction is involved, how the rule of addition or the rule of subtraction, how it changes. तो वही हम लोग देखेंगे. Followed by product of two vectors. दोनों वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट आर द वेज टू मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स, दैट आल्सो वी विल सी. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग देखेंगे. फॉलोड बाय वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर इक्वेशंस एंड वी विल आल्सो सी द एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स. वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही कि व्हाट आर द वेज इन विच वी अप्लाई वेक्टर्स इन आवर रियल लाइफ. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लाइक जैसे कि मैं बोल ही रहा था कि व्हाई दिस चैप्टर इज एसेंशियल टू योर लर्निंग. तो हम वेक्टर्स के बारे में व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट एसेंस ऑफ दिस वेक्टर्स. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अगर हम लोग सोचते हैं तो you can basically divide the physical quantities into two parts. Okay, that can be divided into two groups rather, I will say. One is called the scalar quantities, another is called the vector quantities. ठीक है ना. अब scalar quantities क्या है? The quantities which are fully defined by just their magnitude. जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के दौर पे आपको बोला कि 5 kg राइस, गिव मी 5 kg राइस. इसका मतलब क्या है, 5 किलो चावल, है ना. तो 5 किलो चावल, इसके साथ कोई डायरेक्शन में ऐड नहीं किया, ठीक है. तो 5 किलो इटसेल्फ, इट इज इंप्लाइंग दैट इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ. 5 kg, ठीक है. तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है. गिव मी 2 kg ऑफ पोटैटो, दिस इज अ कंप्लीट स्टेटमेंट इन इटसेल्फ. सो मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इवन लेंथ हो गया आपका. तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल बेसिकली स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज दीज क्वांटिटीज आर
represented by only their magnitude. Okay, you need not have to have a direction, but there are also certain quantities जहां पे direction is very very important. Say for example, मैंने अगर एक example के माफिक मैंने अगर बोला कि I am applying 5 न्यूटन फोर्स, तो 5 न्यूटन फोर्स मैं किस दिशा पे अप्लाई कर रहा हूं ये भी इंपॉर्टेंट है. Not only the direction, not only the magnitude, but here the direction also is very very important. ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे. So vectors represent one of the most important mathematical systems which is used to handle certain types of problems in geometry, mechanics and other branches of applied mathematics, physics and engineering. ठीक है ना, vectors का application बहुत vast है. Okay, and in real world we use vectors very much. So the word vector is derived from Latin word meaning to carry. ठीक है, the subject vector analysis was developed in the latter part of the 19th century by the American physicist and mathematician Josiah Willard Gibbs and the English engineer Oliver Heaviside. ठीक है, so they devised this entire vector algebra as a whole. Now as we were discussing vectors and scalars, ठीक है, vectors क्या है, the physical quantities we deal with are generally of two types. तो physical quantities को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. Scalar quantities and vector quantities, we have already discussed that. A quantity, scalar quantity is a quantity which has magnitude, okay, but no sense of direction is called a scalar quantity. उसका मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ magnitude है, direction is not important. For example, if I am talking about the mass, okay, if I am talking about mass, say for example I gave you an example of 5 kg of rice. So 5 kg itself is a complete statement, है ना. So volume, density, speed, etc. Okay, and vector quantities क्या है, a quantity which has magnitude as well as a sense of direction. तो vectors में हमेशा याद रखिएगा कि vectors में क्या होगा, magnitude के साथ sense of direction भी आता है. So sense of direction also comes into play. So in vectors you have both, one is the magnitude, another is the direction, and obey the laws of vector algebra. So this statement itself is very very important. Students, please take note of it, that if you are asked the definition of vector, most of the students what they do, they just end up here, a quantity which has a magnitude as well as a sense of direction, and they say that it is called a vector quantity. But no, see, these are all right. Vector will have magnitude, vector में sense of direction भी होगा, उसके साथ साथ they must obey the laws of vector algebra. ठीक है ना, ये हम लोग देखेंगे क्यों ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और आप लोग, आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक नोट ऑफ इट प्लीज. इट ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा एंड दैट इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी इज आवर वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आवर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आवर वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है ना, वी विल सी ऑल ऑफ दिस इन डिटेल. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट अस सी how to represent a vector. Okay, we will see how to represent a vector first. So vectors are represented by a, b, c and their magnitude modulus. Okay, magnitude of the vector is represented by the modulus. Now let us show you here what we mean by that. Suppose मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे. This is called a geometric representation of a vector. Okay, so suppose this is O and this is A. So I call this vector nothing but OA vector. मैं क्या बोलूंगा इसको, OA vector. ऐसे आप वेक्टर के ऊपर you give this kind of a direction, okay, this kind of an arrow to represent that it is a vector. So this is a OA vector, and यहाँ पे अगर हम लोग आप देखेंगे तो you have two parts. One is, this is called the tail of the vector and this is called the head of the vector. Vector has two parts. One is the tail of the vector, another is nothing but the
head of the vector, this arrow is pointing towards the direction of the vector. ये arrow क्या show करेगा? The arrow of the vector shows the direction of the vector, in which direction the vector is actually going, and the length OA gives you the magnitude of the vector. So I can say that, see, OA को मैंने मॉड के अंदर ले लिया, दिस इज कॉल्ड द मॉड और द मॉड्यूलस, तो इसको मैंने मॉड के अंदर ले लिया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नाउ आई एम fully concentrating on the magnitude of OA. So magnitude of OA is nothing but the length of OA. Length of OA, O to A कितना लेंथ है, यही मैग्नीट्यूड ऑफ OA हमको देगा. देखिए इसका मतलब क्या है, लेट मी टेल यू एंड टेक एन एग्जांपल एंड मेक यू अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. सपोज मैंने बोला कि आई एम अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स आई एम अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है ना, इन द ईस्ट डायरेक्शन. ईस्ट डायरेक्शन पे मैंने क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 10 न्यूटन, एंड डायरेक्शन ऑब्वियसली इन द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है, so I'll write in the east, 10 Newton force in the east. हो गया. अब ये जो 10 न्यूटन है ये क्या है, ये इस वेक्टर का फुल्ली मैग्नीट्यूड है. 10 न्यूटन इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. ठीक है ना. अब ये जो 10 न्यूटन है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर इसका लेंथ, ये जो लेंथ मैंने ड्रॉ किया ना, इसका कोई एक लेंथ होगा. This if this is O and if this is A, suppose, then the length of OA is basically representing the magnitude of this vector. So if I say that OA is 10 centimeter, if I say that OA is 10 centimeter, then the magnitude is going to be 10 Newton, because 1 centimeter is equal to 1 Newton. हम बोल सकते हैं इसको, right? So this is how we vectorially represent a vector. Another very important thing which comes here and I would like to discuss here is that, see, अगर ये मेरा OA वेक्टर है, ये मेरा OA वेक्टर है, और इस OA वेक्टर को मैंने क्या किया, मैंने बस इस OA वेक्टर को कहीं पर भी इसको घुमा सकता हूं स्पेस पे. You see that? You see, I can take this OA vector anywhere in space. My direction is constant and the length of this is also constant. So it was here initially, you see, OA. So length OA था. अब मैं यहां से लेके इसको यहां पर कर दिया. So see, the direction is also the same. I have not changed the direction and the length is also the same. Length भी मैंने चेंज नहीं किया. तो मैंने तो सेम ही चीज को यहां से उठा के यहां कर रहा हूं, यहां से उठा के यहां कर रहा हूं, यहां से उठा के यहां कर रहा हूं. आई कैन ब्रिंग इट एनीवेयर. सो इसको बोलते हैं, सो आई एम नॉट चेंजिंग द वेक्टर, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग. आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइट इट. ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स क्या है, व्हाट इज पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स. जैसे कि पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब है कि आई कैन रिप्रेजेंट, आई कैन शिफ्ट दिस OA वेक्टर एनीवेयर इन स्पेस, प्रोवाइडेड दैट आई एम नॉट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर एंड आई एम ऑल्सो नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर. देन मैं कहीं पर भी इस वेक्टर को लेके जा सकता हूं और ये सेम वेक्टर होगा. That is going to be just the same vector. Okay, so that is the law of parallel shifting. ठीक है, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, है ना. सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर वी हैव. सो इफ यू गो थ्रू इट you will see that
जीरो वेक्टर इज अ काइंड ऑफ वेक्टर. वन बाय वन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, आई जस्ट वांट योर फुल अटेंशन इन द क्लास प्लीज. सो काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, वी हैव जीरो वेक्टर, वी हैव यूनिट वेक्टर, वी हैव इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स जो कि फिर से दो टाइप का होते हैं, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स एंड को प्लानर वेक्टर्स. अब क्या है, these are the broadly the classification of vectors. first and foremost जीरो वेक्टर क्या है ये हम लोग देखेंगे. जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोला जाता है, तो जीरो वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड नल वेक्टर. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर का मतलब है कि देखिए, अगर मैंने बोला कि यू टेक एन एग्जाम्पल and then try to understand. This is your home, right? Okay. This is your home. You are going from the home to your school. Okay. You have gone from, this is your home and this is your school. From your home you have gone to your school. Okay. And again from the school you have come back to your home. स्कूल छुट्टी होने के बाद क्या करोगे? ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस विल डू द सेम, विल बी इन अ वेरी हरी टू गेट बैक होम. तो आप, क्योंकि आके खेलना भी है दोस्तों के साथ, तो यू हैव अगेन कम बैक होम आफ्टर योर स्कूल इज बेसिकली ओवर. सो अभी आप देखो, इसको देखिए. यस, नाउ यू सी, इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मतलब वी ऑलवेज सी कि इनिशियल पॉइंट से आपका फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है. तो देखिए, पहले तो आपका डिस्प्लेसमेंट इतना रहा. फर्स्ट इट वाज दिस, होम टू स्कूल, टोटल लेंथ यू कवर्ड. बट उसके बाद आप क्या किया, फिर यू हैव रिटर्न फ्रॉम द स्कूल बैक टू योर होम. यू हैव कम बैक टू योर होम फ्रॉम द स्कूल. तो आपका यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया ना. क्यों जीरो हुआ? क्योंकि होम से आपने अपने घर से आपने स्टार्ट किया था और अपने फिर से घर पे ही वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. सो बट सी, दिस इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, यू ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. डिस्टेंस इज स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. तो वेक्टर को तो हम लोग वैसे जीरो नहीं बोल सकते ना, तो इसीलिए हम लोग यहां पे बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज जीरो हियर. दैट मींस इट इज जीरो वेक्टर. ओके, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, मैग्नीट्यूड तो जीरो है ना, इज कॉल्ड वेक्टर और नल वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाई, आप वैसे जीरो भी बोल सकते हो या जीरो के ऊपर ऐसे करके एरो भी दे सकते हो, जो कि वेक्टर नोटेशन है. The initial and terminal points of the directed line segment representing zero vector are coincident and its direction is arbitrary. ठीक है, अब इसको समझते हैं, इस पॉइंट को अभी हम लोग समझते हैं. देखिए, यही मैंने यहां पे किया था. The initial point and this is the terminal point. फाइनली आप एंड कहां पे कर रहे हो, यहां पे आके एंड कर रहे हो ना. तो you see the initial point and the final point are basically the same now, है ना. तो they are basically merging, coincident. ठीक, तो ये तो वेक्टर मैंने सेपरेटली दिखाया इसलिए, नहीं तो क्या होगा, इसको आप ऐसे कर सकते हो ना. This is the same. So the initial point and the final point are in the same point. So it will represent a zero vector. I think it is clear. अभी हम लोग आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. देखिए, जैसे कि जीरो वेक्टर क्या है हम लोगों ने डिस्कस किया. जीरो वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो, लेकिन डायरेक्शन है, क्योंकि वेक्टर में बोल रहा हूं तो ठीक है, बट इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट सेम. यूनिट वेक्टर के साथ क्या होगा, in case of unit vectors you have the magnitude as 1. magnitude कितना रहेगा, magnitude is going to be 1. unit vectors का magnitude होगा 1 and they will also have a direction.
unit vector will have a magnitude of 1 and it will have a particular direction. एक डायरेक्शन शो करेगा, एक दिशा शो करेगा. ठीक है, इसका मतलब है अगर मैंने बोला कि, ठीक है, आप ऐसे समझिए कि वेक्टर्स, आई स्टेड प्रीवियसली ऑल्सो कि एनी वेक्टर यू टेक एनी वेक्टर, सपोज ए वेक्टर, अगर मैंने ए वेक्टर को ले रहा हूं तो दिस इज माई ए वेक्टर. दिस ए वेक्टर विल हैव टू पार्ट्स, वन इज द मैग्नीट्यूड, अनदर इज द डायरेक्शन. तो इस ए वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट द प्योरली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मॉड है, क्या मतलब है मॉड आई एम गिविंग, इसका मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन. और ए वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ए का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन जिस तरफ है उस तरफ ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा. राइट, सो आई कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर मल्टीप्लाइड फॉलोड बाय द यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर. कोई भी वेक्टर को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जहां पर ये है मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर यहां से आप रीअरेंज करके यूनिट वेक्टर को क्या नहीं बोल सकते हो, यहां से आप रीअरेंज करके इजीली बोल सकते हो कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द टोटल वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, है ना. सो इसको बोलते हैं कैप. ए के ऊपर टोपी पहना दिया तो ए कैप. सो ए कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ए कैप, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ए कैप इज इक्वल टू द टोटल ए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर. ओके, सो you just read the statement what is written here. A vector of unit magnitude is called a unit vector. A unit vector in the direction of A is denoted by. So this is how we are actually denoting. So I showed you here. ठीक है, अब इक्वल वेक्टर्स क्या है. देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि दो वेक्टर इक्वल है, इफ आई एम सेइंग दैट द टू वेक्टर्स आर इक्वल, what it means? It means that the two vectors will be equal when they will be exactly same in terms of magnitude or they will be exactly same in terms of direction also. So both magnitude as well as direction जब exactly same हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो दो वेक्टर है मेरे पास, ये दो वेक्टर 100% इक्वल है. उसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स इक्वल है. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज दिस इज अ वेक्टर गिवन टू यू एंड दिस इज अनदर वेक्टर गिवन टू यू. देखिए, अब देखिए, अगर ये वेक्टर है मेरा ए वेक्टर, if this is my A vector and if this is my B vector, अगर इन दोनों वेक्टर का लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी फुल्ली सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि A वेक्टर इज नथिंग बट B वेक्टर. Okay, and that is exactly what it has been said here. Two vectors are said to be equal vectors if they have the same magnitude and the same direction irrespective of their initial points or positions in space. ठीक है, देखिए A वेक्टर यहां से शुरू किया था, B वेक्टर इस पॉइंट से शुरू किया है, फिर भी मैं बोल रहा हूं ना कि दोनों इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज द सेम एंड देयर डायरेक्शन इज ऑल्सो द सेम. दैट्स इट. Now we talk of negative vectors. Negative vectors का मतलब क्या है, दो वेक्टर्स को हम लोग कब नेगेटिव वेक्टर्स मानेंगे, जब मैग्नीट्यूड वाइज दे विल बी द सेम लेकिन डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. जैसे कि देखिए, अगर मैं बोला कि दिस इज माई ए वेक्टर, सॉरी, if I say that this is my A vector, है ना, then I ask you what is your A minus, find me, give me the draw the vector. This is A vector, then how is going to be the negative of A vector? What you will do, you will simply keep the magnitude same.
वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद द मैग्नीट्यूड, हम लोग क्या करेंगे, बस दिशा को ऑपोजिट 180 डिग्री घुमा देंगे. तो दिस इज इन द ईस्टर्न डायरेक्शन, देन माई a माइनस इज गोइंग टू बी इन द वेस्टर्न डायरेक्शन. सी दिस इज द नेगेटिव वेक्टर. ओके, तो ये अगर रहा आपका a वेक्टर, तो आप बोल सकते हो ये a वेक्टर है, तो ये मेरा माइनस a वेक्टर है. गॉट इट? ओके, नाउ सी पैरेलल वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को हम लोग कब पैरेलल बोलेंगे? पैरेलल का मतलब है, यू सी, यू जस्ट लुक एट द वर्ड्स योरसेल्फ. पैरेलल का मतलब क्या है? इट इज जस्ट कंसीडरिंग द डायरेक्शन. अगर मैं बोला आपको ऐसे कि दो लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब क्या, मैंने इसका मैग्नीट्यूड को लेके कोई इंफॉर्मेशन दिया. वन ऑफ द लाइन कैन बी लाइक दिस, वन ऑफ द लाइन कैन बी लाइक दिस, another line can be bigger than that also, but you will still call these two lines as parallel. Same with the vector. Okay, same with the vector. वेक्टर के साथ भी सेम है. ये अगर एक वेक्टर है, ये अगर एक वेक्टर है, दोनों को हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे. मैग्नीट्यूड वाइज दे मे बी द सेम, बट दे मे नॉट बी द सेम ऑल्सो. ठीक है ना? बट यहां पे क्या है, डायरेक्शन सेम होगा. तो यहां से हम लोग एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. आई वांट यू टू ड्रॉ दिस कंक्लूजन. ऑल द इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स. All the equal vectors are parallel vectors, but all the parallel vectors are not equal vectors. Always remember, क्योंकि देखिए equal vectors का मतलब क्या है, magnitude wise also they are equal, direction wise also they are the same. तो ये तो पैरेलल हो ही रहा है ना. इक्वल वेक्टर्स आर बिकमिंग पैरेलल वेक्टर्स, लेकिन ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स. टेक दिस एग्जांपल, इस वेक्टर और इस वेक्टर को क्या मैं इक्वल बोल सकता हूं? डायरेक्शन भले ही सेम हो, लेकिन मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, सो आई विल नॉट बी एबल टू कॉल देम इक्वल वेक्टर्स. ठीक है बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनियर वेक्टर्स. अब कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है? अगर दो वेक्टर्स सेम स्ट्रेट लाइन पे एक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ओके, विल कॉल देम कोलिनियर वेक्टर्स. टेक एन एग्जांपल, लेट अस सी. जैसे कि मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया समथिंग लाइक दिस, और एक वेक्टर मैंने बोला this. So see, these two vectors we will say that they are basically collinear vectors. Kyun they are collinear vectors? Because if you look at them, they are acting on the same line. एक ही लाइन पे ड्रॉ कर रहा है ना, they are acting, run कर रहा है. So two or more vectors are said to be collinear vectors if they act along the same straight line or along the same line of action. तो ये ऐसे करके मैं और भी वेक्टर्स ड्रॉ कर सकता हूं, जैसे कि not only two, I can have infinite number of vectors, and if they are lying on the same line, we will call them collinear vectors. So all this is example of your collinear vectors. ये पूरा मेरा collinear vectors है, right? कोप्लानर वेक्टर्स क्या है? जब दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स भी हो सकते हैं, बट लेट अस से टू वेक्टर्स, व्हेन टू वेक्टर्स दे लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में दो वेक्टर्स जब एक्ट करते हैं, तो हम लोग उसको कोप्लानर्स बोलेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल लेट अस टेक, इट इज गोइंग टू मेक इट क्लियर. आई हैव ड्रॉन टू एक्सिस, वन इज द वाई एक्सिस, यू ऑल नो, another is the x axis. ये दो एक्सिस मैंने ड्रॉ किया. ओके, सो इफ आई हैव ड्रॉन these two axes, one is the x axis, another is the y axis, है ना? And if now I am drawing two vectors, one is like this, another is like this. So see, I can say that these two vectors are coplanar vectors because they are lying on the same plane which is the xy plane. xy plane पे ही तो lie करेगा ना. All the points of these vectors here, okay, you can find the corresponding x coordinate and y coordinate. Similarly, इस वेक्टर के लिए भी कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए,
आप x और y कोऑर्डिनेट ही आपको मिलेगा, दैट पॉइंट इज गोइंग टू लाई इन द एक्स वाई प्लेन ओनली। लेकिन अगर मैंने और एक वेक्टर यहां से ऐड किया यहां पे, विच इज समथिंग लाइक दिस, ओके, और ये something like this which is out of the plane of the board, then you see this is a different plane, okay, it is no more, this vector is not on the xy plane, okay, it is on a different plane। तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम कोप्लानर नहीं बोल सकते। ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज नॉट कोप्लानर विद दिस वेक्टर और दिस वेक्टर, ठीक है। अच्छा, हम लोग यूनिट वेक्टर्स को लेके हम लोग डिस्कस किया, तो देयर इज अ सम। सी क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। यहां पे एक वेक्टर फॉर्म आपको गिवन है, दिस इज अ प्योरली अ वेक्टर गिवन टू यू, दैट इज व्हाट इज द वेक्टर गिवन टू यू, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये आपका ए वेक्टर का इक्वेशन गिवन है, ओके। नाउ यू आर एक्चुअली आस्क्ड टू फाइंड आउट द ए कैप, दैट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, मतलब यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट दिस, दिस इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। कैसे आप फाइंड आउट करोगे, वेरी सिंपल, व्हाट यू विल डू इज दैट, आई टोल्ड यू दैट द टोटल ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय the magnitude of a vector into the a cap which is the direction of a vector or the unit vector। तो अगर अभी आपको सिर्फ और सिर्फ a cap निकालना है तो आप क्या करोगे, a cap is nothing but, from here we can say a cap is nothing but is equal to the total vector a vector divided by the magnitude of a vector। What is the total vector, just write the equation here, I cap minus 2j cap plus 3k cap divided by magnitude of a vector। इसका magnitude क्या होगा, रूट ओवर द स्क्वायर 1 स्क्वायर, आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है, ऑब्वियसली 1 है, सो रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। See, actually strictly saying I could have taken it -2 here because ये -2 है, लेकिन -2 का स्क्वायर करोगे तो वैसे ही माइनस हटने वाला है, so you get it, I can say I cap minus 2j cap plus 3k cap divided by root over 1 plus 4 plus 9, so root 14। So a cap you are getting as I cap minus 2j cap plus 3k cap divided by root 14। So this is the value of the unit vector that actually you are getting, right? I think it's clear. Okay, now what they have said, find a vector in the direction of, okay, in the direction of 3i cap plus 4j cap plus 5k cap which has a magnitude of 3। I want you, all of you, to read this question very carefully and then we will see what is the approach of solving this question। देखिए क्या बोला गया है, फाइंड अ वेक्टर, तो हमको एक वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, सो दिस इज ऑल्सो ए वेक्टर ओनली, 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, let us suppose to be a vector, ठीक है ना। So suppose a vector is nothing but 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, ये रहा हमारा a vector, this is our a vector, okay, this is our a vector। Now
you are asked that find the vector which is b vector, another vector you are actually finding, जो क्या है, जो कि b वेक्टर है, पकड़ लेते हैं ना, एक नाम दे देते हैं b वेक्टर। लेकिन बोला गया है कि ये जो b वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है कितना, नॉट इक्वल टू, आई विल राइट, इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब यू आर गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल टू 3। देखिए मैग्नीट्यूड 3, और b वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अलोंग द a वेक्टर। अलोंग द a वेक्टर डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अलोंग द a वेक्टर डायरेक्शन का मतलब है कि b वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो a वेक्टर का भी डायरेक्शन है। इसका मतलब है b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको अगर हमने a वेक्टर का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो गिवन ही है 3, जस्ट वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद द यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर, दैट इज a कैप। अगर हमने ये किया तो मैग्नीट्यूड तो 3 गिवन ही है, डायरेक्शन भी, दिशा भी मिल जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी अलोंग द a वेक्टर। लेट अस डू दैट, exactly that is being said here. Okay, let us do that. Now you know how to do the sum. So b vector, you can write b vector is nothing but magnitude of b into a cap. Magnitude of b given hai, we are not worried about it. Let us find a cap. A cap क्या होगा आपका, a cap is nothing but a vector divided by mod of a vector. ओके, a वेक्टर क्या है 3, अच्छा यहां लिखते हैं, a वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो गया, डिवाइडेड बाई रूट ओवर 9 plus 16 plus 25. So 16 plus 9 gives you 25, 25 gives you 50. So 3i cap plus 4j cap plus 5k cap divided by root over 50. Okay, root 50. So 5 root 2 हम लोग बोल सकते हैं root 50 को। So you can say that b vector is going to be nothing but 3, okay, 3 तो magnitude है, into a cap. A cap now you write 3i cap plus 4j cap plus 5k cap divided by 5 root 2. So these 3 you can multiply inside, so just multiply, it will become 9 plus 9i cap plus 12j cap plus 15k cap. So 9i cap 12j cap plus 15k cap, और ये 3 मिटा देते हैं। So this is your b vector, the value of b vector 9i cap plus 12j cap plus 15k cap by 5 root 2. So this is the entire b vector which has a magnitude of 3 and its direction is along this direction 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. I think it's clear now. ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस वी विल सी टुडे। सो लेट अस फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट, क्या लिखा गया है यहाँ पे, इट इज द स्मॉलर एंगल फॉर्म्ड when the initial points or the terminal points of the two vectors are brought together. It should be noted that theta must lie between 0 degree to 180 degree. ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं।
फॉरगेट अबाउट व्हाट इज रिटन। देखिए मैंने आपको दो वेक्टर्स दे दिया, आई गिव यू टू वेक्टर, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, ठीक है। सेकेंड केस, अब मैं केस से समझाऊंगा आपको। दिस इज माई वन। सेकेंड केस, एक वेक्टर को पकड़ लीजिए कि ऐसा है और एक वेक्टर इज लाइक दिस, ओके। एंड थर्ड केस, one vector is like this and another vector is like this. ठीक है, अब देखते हैं। Always remember that in order to find the angle between the two vectors, अगर आपको बोला गया है कि what is the angle between two vectors, you are asked to find it out. In order to find the angle between two vectors, either you march the tail of the two vectors or you march the head of the two vectors. टेल के साथ टेल को मिलाइए, मिला के देखिए कि स्मॉलर एंगल कौन सा बन रहा है, दैट इज गोइंग टू बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ओके। या फिर आप एक काम कीजिए, आप हेड के साथ हेड मिलाइए और देखिए कि क्या एंगल बन रहा है, that can also give you the angle between the two vectors, but never you can put together the tail and the head, जैसे कि case 1, this is case 1. In case 1 what we have done, this is the tail. You see, if this is my a vector, ये अगर मेरा a vector है और ये अगर मेरा b vector है, तो आप देखिए ना, a वेक्टर का टेल, दिस इज द हेड ऑफ द a वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ द a वेक्टर। a वेक्टर का जो टेल है b वेक्टर का टेल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है यहां पे, दिस इज द टेल। सो टेल ऑफ द a वेक्टर कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ द b वेक्टर, सो द एंगल, दिस एंगल थीटा, आई कैन सेफली से दैट दिस इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। हो गया, दिस इज केस 1। केस 2 देखिए, व्हाट इज हैपनिंग इन केस 2। सी, इन केस 2 सपोज मान लेते हैं सेम ही वेक्टर है, बी वेक्टर ही मानते हैं इसको और इसको ए वेक्टर मानते हैं। यू सी, यहां पे क्या हो रहा है, द हेड ऑफ द बी वेक्टर, ये तो एरो है, एरो का मतलब क्या है, दिस इज द हेड। So the head of the b vector is coinciding with the tail of the a vector. a vector का head कहां पे है, यहां पे है, ये तो tail है ना a vector का, तो head of the b vector is coinciding with the tail of the a vector. तो यहां पे अगर कोई आपको बोले कि ये एंगल जो है, this angle, this is the angle between the two vectors, it is going to be a wrong statement. Wrong statement होगा, ये एंगल नहीं, हम लोग नहीं ले सकते इसको, क्यों, क्योंकि टेल और हेड कोइंसाइड कर रहा है, हेड और टेल नहीं कोइंसाइड कर रहा है। लेकिन वास्तविक में क्या होना चाहिए था, आइदर टेल कोइंसाइडिंग और हेड कोइंसाइडिंग, या टेल एंड हेड कोइंसाइडिंग। सो आई कैनॉट से दैट दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, नो। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, नाउ यू सी, इफ आई शिफ्ट इट नाउ, दिस बी वेक्टर को अगर मैंने शिफ्ट किया अभी, सपोज इफ आई शिफ्ट दिस बी वेक्टर, इसको तो मैं शिफ्ट कर सकता हूं ना, आई कैन शिफ्ट दिस बी वेक्टर लाइक दिस, सी नाउ एनीवेयर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल शिफ्टिंग। सो ऑल आई एम डूइंग इज आई एम शिफ्टिंग दिस बी वेक्टर। अब ऐसे कोइंसाइड करा दिया, कोइंसाइड कर गया, अभी देखिए टेल ऑफ द बी वेक्टर कोइंसाइडिंग विद द टेल ऑफ द ए वेक्टर, इस एंगल को मैं बोल सकता हूं दिस इज द एंगल बिटवीन द
टू वेक्टर्स ए एंड बी वेक्टर। तो मैंने किसको कोइंसाइड, पहले बी किस तरफ था, बी वाज लाइक दिस, है ना। सो बी को मैंने कोइंसाइड करवाया। सो इफ यू सी दैट एक्चुअली इफ दिस इज, सी if this is the angle which is theta given to you, then the angle between A and B in this case is not theta but it is actually 180 minus theta। ये एंगल जो होगा, ये एंगल होगा आपका एंगल बिटवीन A and B which is 180 minus theta। ओके, और यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, दिस इज केस 3 और केस 3 यहां पे क्या है, यहां पे हेड हेड है, सो नो प्रॉब्लम। सो टेक दिस एंगल थीटा एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ओके, नाउ देयर इज अ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हम लोग इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their sum is represented by the diagonal of the parallelogram whose initial point is the same as the initial point of the given vectors. This is known as the parallelogram law of addition of vectors. सर कुछ समझ में नहीं आया, ओके समझाते हैं, धीरे धीरे सब कुछ आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। सो व्हाट इट इज सेइंग हियर इज दैट सपोज हमने दो वेक्टर ले लिया, वी हैव टेकन सपोज टू वेक्टर्स, वन इज दिस वेक्टर, अनदर इज दिस वेक्टर, एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज माई ए वेक्टर and this is my B vector, and what I am saying that this A vector and B vector are nothing but they are the two sides of a parallelogram। मैंने एक पैरेललोग्राम इसको कंसीडर कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये जो B वेक्टर है मैं सिमिलरली और एक B वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे करके, जस्ट द पैरेलल, ठीक है, आई एम नॉट ड्रॉइंग इट, लेट अस नॉट ड्रॉ इट, एंड ए वेक्टर को भी मैंने यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं जस्ट लाइक दैट, जस्ट ओके। देखिए तो ये क्या बन गया, देखिए ये थोड़ा सा इसको आई विल मेक इट अ बिट मोर। सो ये क्या बन गया, देखिए ये एक पैरेललोग्राम बन गया, दिस इज माई बी वेक्टर अगेन एंड दिस इज माई ए वेक्टर अगेन, ओके, एंड इट इज अ पैरेललोग्राम। सो आई कैन से दैट दीज टू आर द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, आई कैन से दैट, ठीक है ना। सो नाउ ओके, ठीक है, ऐसा ही रहने देते हैं। नाउ यू सी, को मिटा देते हैं। Now you see, this is one side of the parallelogram, this is another side of the parallelogram. Now if I ask you what is A plus B, A vector plus B vector, according to the statement, what that statement was telling, it said that A plus B is going to give me another vector which is nothing but C vector, okay, and C vector कैसा रहा, कैसा रहेगा C vector? C vector is going to be something like this. It is going to start with the initial point of both A vector and B vector. This is our C vector. See, C vector is starting from the initial point of A vector. A vector का भी तो initial point यही है, या फिर tail, I can also say the tail of A vector and tail of B vector. So the tail of A vector, the tail of B vector and the tail of C vector are coinciding, and then C vector is one of the diagonal of the parallelogram. If this is a parallelogram, okay, then C vector is nothing but one of the diagonal of the parallelogram. This is nothing but the parallelogram law of vector addition, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको
समझ में आ गया. So OA is equal to A vector, OB is equal to B vector and OC is equal to C vector. Then OA plus OB is equal to OC, that is A plus B is equal to C. बस कुछ नहीं, बस OA को A vector ले लिए थे. Let us say that this is OA. OA is A vector and क्या बोला गया है, OB is B vector. तो हम लोग ले लेते इसको OB. ओके, OB इज B वेक्टर. देन OC, इसको अगर C ले लिए हम लोग, इस पॉइंट को मान लिए, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, और वी कैन ऑल्सो से OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर. ओके ओके, नाउ देयर इज अ, मतलब अगर हम लोग, ये तो मैंने डिरेक्शन, विथ डिरेक्शन आई हैव फाउंड आउट द वेक्टर एडिशन, है ना. नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? से फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दैट वी हैव अ वेक्टर ए वेक्टर, हाँ, ए वेक्टर हमें गिवन है और हमें बी वेक्टर भी और एक कुछ कोई वेक्टर है विच इज बी वेक्टर. ओके, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. Theta is the angle between them. So we know A vector, we know B vector, and we also know that the angle between A vector and B vector is theta. ठीक है. Now if you are asked that what is going to be my R vector, R vector क्या रहेगा? R vector का मतलब है resultant vector, which is nothing but A vector plus B vector. And you are asked to find out this magnitude of R vector. मतलब direction तो ठीक है, ये भी वेक्टर है, ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन होगा, बट मैग्नीट्यूड, आई एम जस्ट हियर, वी विल कंसीडर व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर. ठीक है ना, इफ वी आर एडिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड बाय, ऑलवेज रिमेंबर दिस डेरिवेशन, आई एम गोइंग टू डिराइव एनीवे, बट ऑलवेज रिमेंबर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर is going to be root over a square plus b square, purely magnitude I am saying here, plus 2ab cos theta, where theta is the angle between a vector and b vector. Theta is the angle between a vector and b vector. Okay, ठीक है. सिमिलरली अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो रहा है, इफ इट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज गोइंग टू बी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos theta. If R is equal to A vector plus of minus B vector. Please note it down. Next page we will see the solution, means the derivation of it, but I want you to note it down, please. Okay बच्चों, अब इसका डेरिवेशन देखते हैं. चलिए, ये जो पूरा हम लोगों ने करवाया आपको, तो लेट अस सी द डेरिवेशन ऑफ इट. देखिए होता क्या है ना, अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन है, let us say that this is a vector which is given to you. Another vector which I am giving you is nothing but this vector. Okay, and I want to find out the resultant vector, which is, sorry, let us start from here, which is this vector C vector. So you all know that C vector is nothing but, या फिर C रहने देते हैं, let us call it R vector, resultant. R vector is nothing but A vector plus B vector. That is going to give you R vector. अब आप एक बात मेरे को बोलिए,
what is the angle between A and B? Can I take this angle as the angle between A and B? No, because you see the head of the A vector is coinciding with the tail of the B vector. और रूल क्या था हम लोगों का रूल हम लोगों का था कि आइदर हेड हेड मिलना चाहिए या फिर टेल टेल मिलना चाहिए, राइट? सो वी विल टेक दिस. What I can do here is I can extend this. I am just extending this line here. Okay. वेक्टर को मैंने एक्सटेंड नहीं किया, बस इस लाइन को मैंने एक्सटेंड किया. और मैंने क्या किया, ये जो एंगल है, ये एंगल, दिस एंगल थीटा is nothing but the angle between A vector and B vector. Okay. Now another thing I would like to do is I would like to drop a perpendicular from the tip of the B vector on this line, इस line के ऊपर, like this. So when you drop a perpendicular, what you get, ये पूरा आपका, let it be O M N. तो आप अभी देखिए, ये जो पूरा आपका OM है, OM, दिस OM इज नथिंग बट माई B वेक्टर. तो ये ON को मैं क्या बोल सकता हूं, ON विल बी B cos थीटा. I am just breaking this B vector along this axis. So it is B cos theta. So this I can write as B cos theta. Similarly, this I can write as NM. NM को मैं क्या बोल सकता हूं, NM can be written as B sin theta. ठीक है, बस we have broken it. Now you look at this entire triangle. ये मेरा, मैं मान लेता हूं कि इसको नेमिंग करते हैं एन एम क्यू, ठीक है ना? तो आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल क्यू एन एम. लुक एट दिस ट्रायंगल क्यू एन एम. तो इन दिस ट्रायंगल क्यू एन एम आई कैन से दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम क्यू एम स्क्वायर is equal to qn square plus nm square. What is happening? Plus nm square. I can say this. Okay. qm कितना है? This is nothing but r. So I can say mod of r square is equal to qn को मैं क्या बोल सकता हूं, qo plus on. So qo is nothing but a vector plus on is nothing but b cos theta. So here I am only taking the magnitude, so let us not write vector here. Okay. तो इसका होल स्क्वायर प्लस nm को मैं क्या बोल सकता हूं, b sin थीटा, b sin थीटा का होल स्क्वायर, है ना? तो यहां पे आप बस स्क्वायरिंग कीजिए, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos theta plus for this you get b square sin square theta. Okay, so you take this b square and b square common, यहां करते हैं, take this b square common, so r square is equal to a square plus b square को कॉमन ले लीजिए, you will get sin square theta plus cos square theta, है ना, प्लस 2ab cos theta. इसका मतलब क्या है, r square. So I can say that r is nothing but root over sin square theta plus cos square theta is 1, a square plus b square plus 2ab cos theta. यही वैल्यू I just derived.
एंड इन केस इफ इट इज a माइनस बी, बस प्लस के जगह आपका माइनस हो जाएगा. देन एट दैट टाइम r इज इक्वल टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. Okay, now you see one very important conclusion I need to draw from here. यहां से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. कंक्लूजन या आप बोल सकते हो सम ऑफ द पॉइंट्स. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा जब 0 डिग्री होगा तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा वैल्यू इज गोइंग टू बी 1. cos 0 इज 1, है ना? सो दैट मीन्स थीटा 0 मीन्स, you see theta 0 means this is 0, the angle between a and b is 0. that means a का जिस दिशा पे direction है, in whatever direction a is, in the same direction angle b, or sorry vector b is also. so दोनों same parallel vectors है. so अगर मैं दो parallel vectors को add कर रहा हूं, उसका मतलब है just I am going to add the magnitude of it, a plus b. okay, because theta, angle theta between them is going to be 0, and that is going to give me the maximum. okay, so r max कितना होगा? a plus b. और r min कितना होगा? r min is going to be a minus b. okay, r min is going to be a minus b. why? because you take theta is equal to 180 degree. 180 का मतलब क्या है? जस्ट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. इफ ए इज इन दिस डायरेक्शन, बी इज गोइंग टू बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, यहां पे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमें यहां डिस्कस करना चाहिए. दैट इज गोइंग टू बी दिस: इफ दिस रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर. तो अगर अल्फा को निकालना है और इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द अल्फा, व्हाट इज गोइंग टू बी माय अल्फा? अल्फा, tan अल्फा, you find it like this: tan alpha is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. इसको there is no need to by heart it, just look at this triangle, everything is going to be clear. tan alpha, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए आप. tan मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस. तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है? b sin थीटा है. I have just put b sin theta there. And what is my base? My base is a plus b cos theta, qo plus on, a plus b cos theta. If here basically a and b are, if you are subtracting the two vectors, then in case of plus there can be minus also. So then tan alpha is going to be b sin theta by a minus b cos theta. ठीक है? Okay, now we talk about a very important concept which is called the position vector. We call it position vector. अब position vector क्या है? Suppose I tell you, so for the position vector what we need to do is that we need to fix a position first. हम लोग पहले एक position को first fix करते हैं, something like this. Okay, suppose the position is 0, 0, or this is the origin 0 only. Okay, now with respect to this I will draw one vector something like this. मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं from this. I'll draw another vector like this. Okay, so suppose this is my a vector. Suppose this is my a vector and this is my b vector. So a vector का मतलब क्या है? OA. b vector का मतलब क्या है? OB. Okay, so b vector, a vector, first let us talk about a vector. A vector means the position of a vector with respect to the origin. This vector का meaning ये है. b vector means the position of b vector with respect to the origin. क्योंकि मैंने origin से connect किया, दोनों वेक्टर को मैंने origin से connect किया.
Now if I ask you, tell me a vector which is like this. Okay, what is this vector? If I tell you what is this vector, we say that this is nothing but position of B vector with respect to A vector. I tell you, everything is going to be clear. So I call it R vector, position of B with respect to A. Okay, this is a vector R vector which is the position of B vector with respect to A vector, and which is nothing but RB minus RA. या फिर you can directly say this is nothing but B minus A, RB minus RA or B minus A. Now see why. Q. If you look at this triangle, this is a triangle that has been formed. If you look at this triangle, you can say that A vector plus RBA vector is equal to B vector. I can write from here. Here I am writing. Okay. I can write A vector plus RBA vector is equal to B vector. तो यहां से RBA वेक्टर को और द पोजीशन ऑफ B वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू A वेक्टर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं नथिंग बट B वेक्टर माइनस A वेक्टर. यही मैंने लिखा था. Okay. So let O be a fixed point in space. You see the O. Then vector OP, ठीक है, OP बोला यहाँ पे, OP, P is any point in space is called the position vector of P with respect to O. If A and B are any two points in space, then so this is our concept of position vector. You are seeing the position of one vector with respect to another. So it is always remember, if you get confused, always remember that thing कि पोजीशन ऑफ बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, विथ रेस्पेक्ट टू, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसका रेस्पेक्ट पे हम लोग लेते हैं उसको हम माइनस करेंगे. इट इज पोजीशन ऑफ बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ए वेक्टर, दैट मीन्स आर बी माइनस आर ए. आई एम सीइंग विथ रेस्पेक्ट टू ए आर बी माइनस आर ए. पोजीशन ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू बी वेक्टर, इट इज गोइंग टू बी आर ए माइनस आर बी. जिसका रिस्पेक्ट पे आप देखोगे उसको आप माइनस कर दोगे. दैट्स इट. Okay. Now you see multiplication of a vector by a scalar. तो कोई भी एक वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया, और कैसे मल्टीप्लाई किया? स्केलर से मल्टीप्लाई किया. जैसे कि व्हाट इट मीन्स इज दैट, लेट मी फर्स्ट टेल यू द फिजिकल मीनिंग ऑफ इट. जैसे कि अगर मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, मान लीजिए कि एक वेक्टर मैंने ड्रॉ किया ऐसा, एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज अ वेक्टर ए वेक्टर. ये क्या है? ये मेरा ए वेक्टर है. Now I tell you that I have multiplied it with 2. So I want to draw now 2a vector. 2a vector का मतलब क्या है? 2 is a number and it is a scalar quantity only, having only magnitude 2. So I am multiplying this a vector twice. That means I am doubling the length of this a vector. तो इसका क्या होगा? 2a vector का सेम डिरेक्शन सेम रहेगा लेकिन लेंथ डबल हो जाएगा. So this I can call as my 2a vector. Okay. So ma is equal to a vector into m, which is equal to m into a vector. ठीक है. These are the ways of multiplying. Just I am rearranging. M times of n into a vector is equal to n times of m into a vector, which is equal to mn a vector, where m and n are any numbers. M plus n of a vector, m plus n are number, is equal to m a vector plus n a vector. जैसे कि होता है जस्ट स्केलर मल्टीप्लीकेशन. m टाइम्स ऑफ a vector plus b vector is equal to m times of a vector plus m times of b vector. Now
when I talk about product of vectors, in product of vectors there are two types. What are these two types in the products of vector that I can say? One, I can say that we call it scalar product, or dot product. Okay. Another is we call it vector product or cross product. और क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. सो हम लोग देखेंगे ये स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एंड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. In case of scalar product, what we say is that we notify it like this, that if you are given with a vector a vector and if you are given another vector b vector and if you are asked to find out a dot b, ऐसा बोलते हैं a dot b, that means you are asked to find out the scalar product, then a dot b ये दोनों वेक्टर है, लेकिन जब इन दोनों को हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें वेक्टर नहीं मिलेगा, हमें एक स्केलर मिलेगा. दैट मीन्स नो मोर दे आर वेक्टर, दे आर प्योरली स्केलर नाउ. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. Another thing is the vector product. In case of vector product, what happens? Take the same example. A vector है, B vector है, ठीक है, दोनों वेक्टर आपको दिया गया है. You are asked to find out A cross B. We call it like this, A cross B. This A cross B is going to give you another vector which is your C vector. So here you are actually getting another vector which is actually हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे कि ये जो C vector का डायरेक्शन होगा, the direction of the C vector is going to be both perpendicular to the direction of A vector as well as the direction of B vector. देखिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. आप इस फिगर को देखिए और हम लोग समझेंगे कि यह क्या है. इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो ये जो एंगल है ये थीटा है. ओके, दैट कैन बी देयर टेल्स और देयर हेड्स व्हाटएवर. देन देयर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द नंबर ए बी कॉस थीटा. Okay, that is the magnitude of b, magnitude of a into cos theta, where magnitude of a and magnitude of b are the magnitudes of a vector and the b vector respectively, and theta is basically lying between 0 to 180 degree or 0 to pi. It is denoted by a dot b. Okay, this is the statement. Let us now understand it in a detail. देखिए दो वेक्टर आपको दिया गया है. One is this, another is this. You are been given two vectors like this. ठीक है ना. अब ये दो वेक्टर आपको दिया गया है और ये बोला गया है आपको कि ये मेरा जो है ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है एंड द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. ठीक है, कंसीडर दिस केस, द एंगल बिटवीन देम इज थीटा. नाउ यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट ए डॉट बी. ए डॉट बी का मतलब क्या है, हम लोग देख रहे हैं magnitude of A, you take purely magnitude of B and cos of the angle between them which is theta. And since we are not adding any direction here, so it is a scalar quantity. हम लोग magnitude और theta ले लिया. magnitude पे कोई direction हम लोगों ने add नहीं किया, इसीलिए dot product is 100% a scalar product. And इसको मैं rearrange कर सकता हूं ना. You just consider it like this. Think it. A का magnitude I can say B का magnitude B into B cos theta. Can I not say like this? B cos theta. अब ये B cos theta क्या है? B cos theta is nothing but the projection of B vector on A vector. Similarly, this I can also write as इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A cos theta into
magnitude of B. That is going to give me the projection of A on B. So dot product का मतलब क्या है? Dot product का मतलब है the projection of one vector on another vector. Okay? So you see A dot B, what it means? It means A cos theta. A cos theta is how much? It is the projection of A on B multiplied by the magnitude of B. है ना? Similarly, A dot B I can also say that the projection of B vector on A multiplied by the magnitude of A. That is the physical meaning of dot product. This is exactly what is being explained here. So geometrically, the scalar product of two vectors is equal to the product of the magnitude of one and the projection of the second in the direction of the first vector. Getting the point? A dot B is equal to A vector, B vector, cos of the angle between them, cos theta, where A mod of A vector is the projection of B vector in the direction of A vector, right? So the diagram is also shown here. Okay. Now you are asked, this is a question, you are asked to find out the projection of vector I cap plus j cap plus k cap on the vector I cap minus j cap plus k cap. So I would like you to read this question very carefully. Okay, let us see. See how to approach such a sum. First and foremost, you will take that you are asked to find out the projection of vector. This is a vector. I don't know, I will just name it. A vector is I cap plus j cap plus k cap. Okay, I have another vector B vector which is I cap minus j cap plus k cap. अच्छा, ठीक है. Now the projection of vector, so this A vector projection, they want the projection of A vector on B vector. So see why I ask you to name it, the things is going to be clear for you. We want projection of A vector on B vector. That's it. So first and foremost, what you will do, you know that A dot B is nothing but A B cos theta, उसको हम लिख सकते हैं A cos theta into B. क्यों मैंने ऐसा लिखा? क्योंकि I want the projection of A on B. ठीक है ना? तो A cos theta is the projection of A. So you find out A cos theta is nothing but A dot B divided by mod of B. A dot B क्या होगा? देखिए I cap के साथ I cap को आपने डॉट किया तो I cap is going to give you 1 plus J cap minus J cap is going to give you minus 1. So this is 1 minus 1 plus K cap is going to give you 1 divided by root 3. Why root 3? Because root over 1 square plus of minus 1 square plus 1 square. That is going to give you. So it is 1 by root 3. The answer is 1 by root 3. Option B is the correct answer. Okay, scalar product in particular cases. Now you see scalar product का कुछ properties है. अब बस there is nothing to by heart here. You can very well understand that. See, A dot B is nothing but B dot A. We have seen already that, right? A dot B is nothing but B dot A. Okay, because A dot B का मतलब क्या है? A B cos theta. B dot A का मतलब भी वही है, A B cos theta. Okay. Now A dot B plus C is equal to A dot B plus A dot C. MA times of B is equal to M times of A dot B, which is equal to A dot MB. If theta is equal to 0 degree,
then A dot B is equal to AB. Obviously cos theta, theta is equal to 0 degree, cos 0 is equal to 1. That is the case of like vectors. If theta is 180 degree, then it becomes minus A into B. Obviously, that is the case for unlike vectors. If A and B are unit vectors, then A dot B is equal to AB cos theta, where theta is the angle between them. And A dot B is equal to A square, mod of A square, which is equal, or mod of A we can write to be root over A dot A. Okay, and if A and B are perpendicular, okay, A is perpendicular on B, then A dot B becomes 0. Obviously it will be 0 because A dot B is what? AB cos theta. If the theta, angle theta is 90 degree, then AB cos theta, so cos 90 becomes 0, so dot product becomes 0 when the two vectors are perpendicular. Okay. Now we come to the cross product. Okay. Now cross product of two vectors is also going to give you a vector only. If I am talking about the cross product of two vectors, the cross product of two vectors will give you another vector. The cross product of two vectors A and B is defined as a vector A cross B, whose magnitude is AB sin theta, where theta is the angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane containing A and B as given by the right hand rule. We are going to discuss the right hand rule. Don't worry about it. So, first and foremost, I would like to draw the vectors here. Just a minute. Yes. So, let this be a vector and let this be another vector, and suppose they are at 90 degree to each other. ये 90 degree है. I am saying this is A vector and this is B vector, and I am saying that find out a vector which is C vector, another vector C vector. Obviously I said ना कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो भी एक वेक्टर ही होगा. तो यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि सी वेक्टर विच इज नथिंग बट ए क्रॉस बी. दिस इज अनदर वेक्टर सी वेक्टर विच इज नथिंग बट ए क्रॉस बी. अब ए क्रॉस बी जब बोलते हैं, पहले आप ध्यान दीजिए प्लीज कि हम लोग कैसे डायरेक्शन को निकालेंगे. व्हेन आई एम सेइंग ए क्रॉस बी, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल व्हाट वी डू, you put your right hand like this, all of you ऐसा कीजिए राइट हैंड को. उसके बाद it is A cross B, you just the direction of all the four fingers of your hand should be along A, जो कि मेरा फर्स्ट वेक्टर है A. So it is along A and then you are multiplying it with B, that is A cross B. You do this and you curl it like this. A, first I am putting it along A, then A cross B. So I am curling it. You see in which direction is the thumb. ये जो thumb है, thumb का direction के कौन सा direction पे है? It is perpendicular to the board and it is pointing outside. So this is the direction of C vector. This is the direction of C vector towards you. राइट. सो सी वेक्टर इज गोइंग टू बी ए क्रॉस बी. अब अगर हम लोग दिशा को चेंज कर देते हैं, लेट अस सी, वेरी इंटरेस्टिंग, लेट अस सी कि बी क्रॉस ए क्या होगा. बी क्रॉस ए. ओके, देखिए अगेन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल. सो इट इज बी क्रॉस ए. सो यू पुट ऑल द फिंगर्स अलोंग बी. Okay, B cross A, curling it towards A. In which direction is your thumb? Inside. Inside. So B cross A becomes minus of C vector. If A cross B is my C vector, then B cross A is nothing but minus of C vector.
ठीक है, और A क्रॉस B को हम लोग क्या बोलते हैं, यस वी कॉल इट, यू कैन राइट इट डाउन, A क्रॉस B is nothing but A B डॉट प्रोडक्ट पे हम लोग साइन कॉस लिए थे, कॉस ऑफ द एंगल, यहां पे हम लोग लेंगे साइन ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B. Okay, and obviously it will have a direction also. Direction is going to be C cap, where C is my new vector, na? Because it is giving me a vector only. Okay. Now we find it out by determinant rule. अब determinant rule से भी आप निकाल सकते हो, या फिर पहले हम लोग देख लेते हैं. First let us discuss the determinant rule only. You see, A is equal to A1 I cap. A is a vector which is given by A is equal to A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. And if B is a vector given by B1 I cap plus B2 J cap plus B3 K cap. So all you need to do, I need to find out A cross B. According to the determinant rule, you arrange it like this: I cap, J cap, K cap. Now the coefficient of A first, I cap का क्या coefficient है? A1. Okay. J cap का क्या coefficient है? A2. K cap का क्या coefficient है? A3. Similarly, B vectors के लिए I cap का coefficient is B1, J cap का coefficient is B2 and K cap का coefficient is B3. Now you solve it. For I cap, you close this row and this column, closing it like this. So it is C. What you can see? It is A2 B3 minus B2 A3. A2 B3 minus B2 A3. Minus of J cap you do, minus of J cap, A1 B3 minus B1 A3. Minus of, it can be minus of J cap also, या फिर अगर अपने order को same, if you are putting plus, then it should be like you just reverse the order. B1 A3 जैसे कि यहां पे किया गया है, B1 A3 minus A1 B3 plus K cap. So you put it like this: A1 B2 minus B1 A2, A1 B2 minus B1 A2. So this is going to give you the C vector, right? This is going to give you the C vector and the cross product of A cross B. Thank you. With this, we come to the end of our vector classes, and I hope that this class is going to be very helpful for your upcoming examination. And for more classes, please stay connected with us.